to rearrange your mind? Yes, please. So first of all, I want to know that my voice is clear, and is the PPT visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much for the information. So I feel that, just to, I know a 2 hour class and then another 2 hours ahead can be slightly taxing. So let's try to, give it a real life connection. Since many of you are researchers, uh, I do not know whether into a job or not. लेकिन आपको पता है कि हमारी भारतीय सभ्यता के हिसाब से बहुत जरूरी है कि हम एक घर बनाए, राइट? और मेरे एक अंग्रेजी के टीचर थे जिनकी बहुत अच्छी कहावत थी। उनका ये कहना था कि fools build houses and wise men live in them, and my father built a house and I live in that house. तो अगर अपन इसको देखें तो fools build houses, मूर्ख लोग घर बनाते हैं। अभी अगर आप पक्षियों के घर, बहुत तरह के घरों के बारे में सोचे तो खैर अपन इंसानों के घर के बारे में तो मूर्ख लोग क्यों बनाते हैं मैम? इसमें मूर्खता की क्या बात है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने लिए घर बनाएं। सो मूर्ख लोग घर बनाते हैं का तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मनी, रिसोर्स कंज्यूम्ड इन बिल्डिंग अ हाउस, घर बनाने के लिए कितना पैसा, कितनी मेहनत, सब मिलन मिला के इतना ज्यादा टैक्सिंग होता है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और होशियार लोग उस घर में रहते हैं। अभी अपन रेंट एग्रीमेंट, किराएदार, इस सब की तो बातें कर ही नहीं। दूसरा पार्ट इस कहावत का क्या था कि मेरे पिताजी ने एक घर बनाया और मैं उस घर में रहता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पिताजी मूर्ख, उन्होंने घर बनाया, और मैं होशियार क्योंकि मैं उस घर में रहता हूँ, है ना? तो मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाषा, और भाषा को किस प्रकार से अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब मैंने घर की बात क्यों करी? क्योंकि मैं आज की जो क्लास शुरू करना चाहती हूँ उसका कनेक्शन हमने कल पढ़ा। वाक्य क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, एंड रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं, हाउ टू अवॉइड सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, ये हमारा टाइटल था। कल एक और बात हुई थी कि मैंने भी हिंदी में नहीं, तो शायद मैं कल थोड़ी सी कम प्रिपेयर्ड थी, आज थोड़ी सी बेहतर हूँ, बट फिर भी कई कई ऐसे अंग्रेजी ग्रामर के शब्द हैं जैसे कि प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर, उनका मैं अभी भी हिंदी में प्रयोग समझ नहीं पाई हूँ। मैंने अगर गूगल ट्रांसलेटर से देखा भी तो मुझे उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिला। तो क्लास के बीच में जो लोग इस बारे में कुछ मुझे बता सकते हैं या एग्जैक्ट हिंदी का शब्द तात्पर्य दे सकते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड। अब हम वापस से घर की बात पर आ जाए तो आपको पता है जहां मैं रहती हूँ जोधपुर, जोधपुर में घर पत्थर के बनते हैं, छितर। मुझे नहीं पता कि राजस्थान के दूसरे भागों में क्या होता है, कोटा में घर ईंट के बनते हैं या पत्थर के बनते हैं, पर जोधपुर में तो पत्थर के ही बनते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतना गर्म शहर है तो पत्थर धीरे गर्म होता है और इसीलिए थोड़े से पत्थर के घर ठंडे रहते हैं।
ईंटों के घर ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, जैसे भी। तो अब मैं आपको क्या, फिर भी आप ये कहेंगे कि मैडम कहाँ से कहाँ पहुंच गई, टॉपिक तो लिख रहा है स्क्रीन पर, सेंटेंस फॉल्स केस एंड अग्रीमेंट, जो कि आज का हमारा टाइटल है, लेकिन तात्पर्य तो कहीं कहीं दूर ही जा रहा है। तो मैं 1 मिनट में आपको इस पर ले आऊंगी। जो हमारा वाक्य है, जिस तरह से घर बनता है, ईंट या पत्थर, उसके साथ सीमेंट लगता है, ग्लू लगता है, अलग अलग वायरिंग लगती है, बहुत सारी मटेरियल एक साथ यूज होते हैं, तब जाके एक घर खड़ा होता है। अगर उन सब मटेरियल्स में से भी अगर एक तरफ पत्थर लगाया और एक ईंट लगाई और एक पत्थर लगाया, तो घर ना बन पाएगा। कहीं पे सीमेंट लगाया और कहीं पे फिक्सिट लगाया, तो भी घर नहीं बन पाएगा, है ना। उसी तरह जो कि हमारा वाक्य है, अगर हमको सही वाक्य को बनाना है, तो जिस प्रकार घर में अलग अलग वस्तुओं को जोड़कर एक घर बनाया जाता है, वैसे ही सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में, एज पर रिक्वायरमेंट, जो चीजों की जरूरत होती है घर बनाने के लिए, उसी प्रकार अगर हमको एक वाक्य बनाना है, तो वाक्य के भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, उनका सही फॉर्म, उनका सही तात्पर्य, उनकी सही स्थिति में इस्तेमाल करने से ही वो करेक्ट वाक्य बन के आएगा। तो आज हमने कल पढ़ा सेंटेंस पैटर्न्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हमने आपको कहा एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने कहा आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हमने आपको कहा कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट होता है, हमने कहा कि एक्टिव से पैसिव को डूअर को रिसीवर की जगह ले आओ, रिसीवर को डूअर की जगह पे ले आओ, ऑक्सिलरी वर्ब ले आओ, वर्ब का फॉर्म चेंज कर दो, बाय लगा दो, है ना। तो ये सब अपन हमने ये बातें करी कि इस प्रक्रिया से एक्टिव से पैसिव बन जाता है। लेकिन हमने ये भी कहा कि टेंस बदलता है, बहुत कुछ। तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कई लोग जो अंग्रेजी के साथ इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे कि हम वाक्य के, हम पहचान जाते हैं ये क्रिया है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये हर एक चीज है, कोई कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको किस प्रकार में लगाना है, वहीं पर आकर हम अटक जाते हैं। और आज की कक्षा हम इसी चीज को देखते हुए निकालेंगे और इसी को समझते हुए निकालेंगे। जी, अब आपके सामने 7 वाक्य है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें गलती क्या है। एक एक जन, जैसे भी आप लोग तो बहुत सारे हैं, जिसको आ सके वो पहले मुझे बता दे, अनम्यूट करके अपने आप को। बट एक बार एक ने बता दिया तो फिर वापस उसे रिपीट मत करिएगा, उससे टाइम वेस्ट होता है। जी Ma'am, in first sentence, been is missing. Have been, have not been. पूरा वापस बोल के बताएं मैम। नो, नॉट ऑडिबल। Hello. हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। यस, आई कैन हियर यू नाउ मैम। प्लीज बोले, रीड आउट द फर्स्ट सेंटेंस विद द एरर ओमिटेड। मैम सिंस की जगह फॉर, मैम बीन आना चाहिए ना यहाँ पर, बिकॉज सिंस एंड फॉर के साथ जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, तो आई हैव नॉट बीन सीन हिम नहीं आ सकता मैम ऐसा। देखिए, अभी किसी ने जवाब दिया था और वही करेक्ट जवाब था, मैं ये कैच नहीं कर पाई कि कौन बोल रहा है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. Since की जगह for, यस मैम, यस लगेगा, यस नो डेफिनेटली, right, is the error over here. Yes please. Second one, whenever he comes here, he brings a lot of gifts for me. lovely, Pragya, thank you so much. Whenever he is coming here, he brings a lot, will become whenever he comes here. एक और तरीका ये हो सकता है, in order to match both of the parts of the sentence, is whenever he is coming here, he is bringing a lot of gifts for me. यस तो मैम, 2 ways हैं इसको करेक्ट करने के। it is appearing to me that you are
complaining against my friend. It is appearing to me that you are Yes, complaining. please. The It third one, appeared to me. it appears to me. I think it is Miss Ruchi Sharma speaking. It Yes. appears to me that you are complaining against my friends. Fourth one, please. The old man sitting on the bench is living here for more than a month. हाँ, कुछ गलती है इसमें करुणा. Has been living here for more than a month. Yes, Pragya. The old man sitting on the bench has been living here for more than a month. Yes, please. Now, fifth one. The secret of his sound health lies in the fact that he gets up before sunrise and goes for a walk. Lovely. Why is it so? That it is some type of a habitual action which is being talked about. So, gets up will go well over here. Yes, please. Next one. And as soon as he will reach home, he will be send you the books. No. Ma'am, Yes, please. as soon as he reaches home, he will send you the books. Yes, as soon as he reaches home, Present tense, ma'am. he will send you the books. Yes. Seventh one, last one, please. Last one's Lucky Charm. I have known him for 10 years, but I don't know where he lives. Okay. Yes, great. I have known him, not been knowing. I have known him for 10 years, but I do not know where he lives. Why have we looked at all of these examples? We have tried to look at the example. Yesterday, जो हमने पढ़ा था subject, verb, object, indirect object, direct object, adverbial, सब ठीक है यहाँ पर. But क्या problem हो रही है? One or the other components is not in the correct form. तो जो भी या तो जैसे कहते हैं ना बजरी या सीमेंट या ग्लू या पत्थर, उनका जो प्रोपोर्शन है वो गलत है, उनका जो फॉर्म है वो गलत है. यही हम आज का हमारा टॉपिक है कि केस एग्रीमेंट, संज्ञा क्रिया समन्वय, मतलब नाउन वर्ब कोऑर्डिनेशन और अग्रीमेंट. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितने भी हमारे वाक्य के अलग अलग भाग हैं, उन सबका जो फॉर्म है, उन सबकी जो प्रस्तुति है, उसमें समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि एक भाग पास्ट टेंस में, एक प्रेजेंट टेंस में. कल हमने ये भी बात करी थी कि वर्ब के 4 फॉर्म्स, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये भी होता है कि इररेगुलर वर्ब्स होते हैं और रेगुलर वर्ब्स होते हैं. तो खास तौर से एक जो कि बहुत बड़ा जरूरी इंग्रेडिएंट है इस समन्वय का, वो ये है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, क्रिया का जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही होना चाहिए. उसके लिए कई प्रकार के रूल्स है, बट आपको क्या है कि रूल्स हो सकता है कि हमने 10 रूल पढ़ लिए, 15 रूल पढ़ लिए, तो हम भूल जाएंगे कि रूल में क्या था. तो ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अगर हम एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना कि ये समन्वय क्या चीज है, इस समन्वय में हमें किस प्रकार से कार्य करना है, तो हमें बेहतरी होगी आगे जाकर. कि दिस अग्रीमेंट इज दिस दैट. देखिए, रेल की पटरी है, बहुत बढ़िया है. रेल की पटरी पे गाड़ी तो नहीं चल सकती,
है ना। गाड़ी की सड़क पर रेल तो नहीं चल सकती है, और हवाई पट्टी पर रेलवे लाइन तो नहीं लगाई जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो जिसके लिए सूटेबल है, जहां पे वाक्य में समन्वय बैठ रहा है, उसके बेसिस पर हमें जो वाक्य के अलग अलग भाग हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बॉय इज स्विमिंग। एक लड़का है और एक एक्टिविटी कर रहा था, इज यूज हो रहा है। जहां पे प्लूरल बॉयज हो जाते हैं, द गर्ल इज डांसिंग, द गर्ल्स आर डांसिंग। तो जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है वहां पे प्लूरल वर्ब का फॉर्म हो जाता है ना। लेकिन ये तो सबसे पहले थंब रूल है, ये तो सबसे जरूरी नियम है। लेकिन इसके आगे बहुत सारे नियम हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमको इस चीज को किस प्रकार से समझना है। ठीक है, अब एक और शब्द नामावली जो कि आप लोगों के लिए, और वन मोर टर्म जो कि आपको और समझने की जरूरत है, उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या तात्पर्य है? वो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, इज अ डिटर्मिनर। वो कहते हैं कि दिस, है ना, इनडेफिनेट और डेफिनेट डिटर्मिनर्स, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट the, right? Demonstratives are types of determinants, और इनका क्या काम है कि वो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। this car, these fruits are mine, that car is his, those fruits are his, this and that singular है, these and those plural। तो अब हमें क्या है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, दिस दैट दीज दोज, उनको भी संज्ञा के साथ या नाउन के साथ उनका रिलेशन बिठाना है। तो जब हम बुक्स कहेंगे तो दीज बुक्स और दोज बुक्स कहेंगे। जब हम सिंगुलर कहेंगे कि दिस रूम, दीज रूम्स, दिस दोज होटल्स, दीज होटल्स। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी गलती हम ये दिस, दीज, दैट, दोज लगाने के जगह पर करने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसमें करेक्शन लेके आए। अब मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी हमने क्या कहा कि संज्ञा और क्रिया में समन्वय होना चाहिए, उसी प्रकार से सर्वनाम और क्रिया में भी समझौता या समन्वय होना चाहिए। अब सर्वनाम के साथ कैसे करना है, अभी आपको पहले ये थ्योरी बताती हूँ, उसके बाद इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना। तो अब जो सर्वनाम है वाक्य में, या तो वो सब्जेक्ट है, या वो ऑब्जेक्ट है, या वो पोजेसिव फॉर्म है। तो अब क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपन ने किया, अब पोजेसिव एक ऐसी चीज है जो कि आपने नहीं पढ़ी होगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपन ने कल किया था बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स में कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो सर्वनाम है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में भी हो सकते हैं, और पोजेसिव की पोजीशन की स्थान पर भी हो सकते हैं। पोजेसिव के स्थान पर ये कैसे होते हैं? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओनरशिप। दिस बैंक अकाउंट इज माइन, दिस शर्ट इज योर्स, this table is his, this song is hers, this house is ours, this dining room or this plate is theirs, है ना। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको ऐसे कहेंगे, this is this neighbor, this plate belongs to my neighbors, it is theirs, राइट। तो अब पोजेसिव क्या है? ओनरशिप एस्टैब्लिश करता है। तो जब हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ संज्ञा और क्रिया में ही समन्वय होना चाहिए, सर्वनाम और क्रिया में भी समन्वय होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, अगर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है, और अगर वो पोजेसिव सेंस में भी अवेलेबल है। एक सेकेंड देखिए, अब अभी अपन वापस से इसको देखेंगे एक बार। आप लोगों को थोड़ी सी अभी तक तो सिर्फ इतना सा है कि समन्वय होना चाहिए।
अब समन्वय के बहुत प्रकार के नियम हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि समन्वय होना चाहिए डिटर्मिनर्स में, एक होना चाहिए समन्वय सर्वनाम या प्रोनाउन में, एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड, कर्ता और क्रिया का समझौता, जो कि बहुत जरूरी है कि, और ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सोचा होगा, इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं। अब ये 4 वाक्य देखिए, whether the subject is in the third person or not, he walks versus I walk, तो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन किसी और की बात कर रहे हैं या किसी और की ही थर्ड पर्सन में बात। whether the subject is singular or plural, ये सिंगुलर प्लूरल वाली जो बात है ना, ये यहाँ पर सबसे बड़ा इसका नियम है। इसके आगे हम बारे में हम और भी ज्यादा आगे पढ़ेंगे। he walks versus they walk, तो ये नहीं होना चाहिए कि he walk down the street and they walks down the street। आप देखेंगे कि हमेशा अंग्रेजी में सबसे बड़ी गलती इसी में ही होती है कि जो क्रिया है, क्रिया का सिंगुलर है या क्रिया का प्लूरल, whether the action is present tense or past। तो बेसिकली हमको क्या क्या चीजें देखनी है कि बोलने वाला कौन है, एक्शन किसके साथ होगा, क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है, क्या वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में, whether the action is something which is habitual or is going on only at this moment। he walks to school versus he is walking to school। अगर अभी अपन अपने पुराने एग्जाम्पल्स में से एक देखें कि I have known him for 10 years but I don't know where he lives, तो ये क्या है कि एक हैबिचुअल एक्शन है। तो I have been knowing him, I have known him, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि अपन को इस हैबिचुअल एक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन सही प्रकार से देता है। तो अब वापस से अपन इस चीज को देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर संज्ञा कर्ता और क्रिया में समझौता रखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वाक्य किस तरह से बना हुआ है, क्या सिंगुलर प्लूरल, क्या है उसका टेंस। वर्षा सिंह is advised to please mute yourself। अच्छा, so there is no provision for admins muting over here। वर्षा म्यूट कर लीजिए आप। और फिर क्या वो एक्शन एक ही बार हो रहा है या वो बार बार हो रहा है, ये चीज भी ध्यान रखने योग्य बात है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन की कौन सी क्रिया है। तो अब बहुत सारे रूल हैं, अब एक एक अपन इस रूल को देखते चलेंगे, इसके एग्जाम्पल देंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब the verb and subject must agree in number। if one is singular, other will be singular, if one is plural, the other will be plural। if the subject is singular, verb will be singular, subject plural, this। he plays football। मैम ये plays तो है ना सिंगुलर है कि प्लूरल है मैम वो, तो बेसिकली plays अगर अपन वर्ब की दृष्टि से देखें और वर्ब के 4 फॉर्म्स में देखें तो plays सिंगुलर। अब वापस से प्लेस फुटबॉल के पास मैंने 2 और सेंटेंस लिखे हैं। अगर हम वापस से अपने प्रोनाउंस पे जाएंगे और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव केस की दृष्टि से इसे वापस देखेंगे तो हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि he plays football, ठीक है, सब्जेक्टिव, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ऑब्जेक्टिव, द फुटबॉल इज theirs, possessive। तो एक ही तरह के वाक्य में कैसे वो सब्जेक्टिव बन रहा है, कैसे ऑब्जेक्टिव बन रहा है और कैसे पोजेसिव। he plays football, they play football। तो वर्ब और सब्जेक्ट का मैचिंग होना चाहिए, सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लूरल हो तो। अब देखिए, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, यहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ती है। तो जो ये अग्रीमेंट है ना, इस अग्रीमेंट को नंबर में, टेंस में, केस में, इस सब में
एक साथ इनकी हार्मनी होनी चाहिए। वापस से मैं कह रही हूँ कि अगर आप मैगी में शहद डालेंगे तो मैगी का कुछ बेहतर तो नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से अगर अपन रबड़ी में नमक डाल देंगे तो पूरी की पूरी रबड़ी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम वाक्य के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक साथ बैलेंस करके सही से नहीं चलेंगे तो हमारा वाक्य खराब हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन वर्ब अग्रीमेंट, केस अग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड अग्रीमेंट भी इसका एक और नाम है। तो ये सारी चीजें इसी उस पर चलते हैं। अब ये देखिए, द शॉप सिंगुलर opens at 9 o'clock. On Thursdays, the shops open late. जब एक शॉप है तो वो ओपन है, जब मल्टीपल शॉप्स हो गई हैं तो वो सिर्फ ओपन है। अब क्या होता है? कंफ्यूजन, क्योंकि हमने वाक्य बोलना शुरू किया किसी प्रकार से और वो चलते चलते कहीं और ही पहुंच गया। It can be argued that a person has the right to know when they are dying. हाँ, a person है तो हैज लगेगा, सिंगुलर है ना, बट वो चलते चलते when they are dying की जगह when he is dying is also a correct way of looking at it. It can be argued that a person has the right to know when he is dying. आप इसको इस तरह से देखिए, that persons have the right. तो अगर persons है तो they have, एक person है तो he or she has. अब ये has, have, they, is, are, ये सब इस agreement का पार्ट है. It can be argued that people have, persons have the right to know when they are dying. He is dying, इसका सिंगुलर हो जाएगा। तो होता क्या है कि यहीं पे कंफ्यूजन बैठता है और ये कंफ्यूजन, बहुत सारे रूल्स हैं, इस कंफ्यूजन का निवारण करने के लिए बहुत प्रकार के रूल्स बने हुए हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अपन है ना किसी चीज को बिल्कुल रूल लर्न करके, जिन्होंने बचपन में मैथमेटिक्स के थ्योरम टेबल्स याद किए हैं, कईयों को डिफिकल्टी हुई है, वो इस बात से अच्छी तरह से अग्री करेंगे कि देखिए मैडम, रूल बना लेना, बता देना सफिशिएंट नहीं है, याद भी तो रहना चाहिए, और हम अपनी कोर रिसर्च एरिया को याद करें या हम बैठे बैठे है ना इन रूल्स को याद करें। तो वो एक बिल्कुल वैलिड अग्रीमेंट है कि हम है ना क्या क्या याद कर सकते हैं, कुछ लिमिट होती है याद रखने। तो उन सब लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड, केस अग्रीमेंट, इन सबको याद करने का रूल तो मुश्किल है, बट सबसे आसान तरीका है बार बार उसका प्रयोग करके लिखना। प्रयोग से कई बार चीजें ज्यादा इजीली आ जाती हैं, बाय प्रैक्टिसिंग रादर देन ओनली बाय इम्बाइबिंग। तो पहला रूल तो क्या था, जहां सिंगुलर है वहां सिंगुलर और जहां प्लूरल है वहां प्लूरल, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है। द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स और फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब देखिए, वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ग्लास की बात है, एक ग्लास की बात, इतने सारों में से एक। और अगर अब मैं ऐसे ये कर दूं कि राइट, तो ग्लासेस आर एम्प्टी, ठीक है, बट हमने आइडेंटिफाई कर दिया है वन ऑफ द ग्लासेस, तो उसके बीच में अगर कोई भी शब्द का प्रयोग हो रहा है तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द वन। ये दूसरा रूल है। सेकेंड एग्जाम्पल, द बुके। बाय द वे, कुछ लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी हो। आजकल बुके तो एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है, और ये बुके के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजी में ये एक चीज, मैंने कल भी इसको मेंशन किया था आप लोगों को, द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफीम एंड द फोनीम। जिस प्रकार से शब्द को बोला जाता है और जिस प्रकार से उससे लिखा जाता है, उसमें बहुत अंतर है। और कई ऐसे शब्द हैं जिनको बोला एक ही समान जाता है, जैसे कि I will write it just like
here, Like here. children. Ma'am, like हाँ. children. हाँ, children में how बेटा? Singular and plural दोनों हो जाता है मैम. हाँ, children is singular plural also. Yes, and like police, we say police. Police, government, state, parliament, all ma'am. of these are examples. And Yes, please. people, it's again plural. We don't say Yes. Yes. The bouquet of red roses smells so sweet. So bouquet is taken as a single subject. That is why the bouquet smells so sweet. If it had been bouquets, the bouquets of flowers smell so sweet. Then with the plural subject, the verb will also automatically change. So this is the second rule of subject agreement. Now, this again, the third one for your attention, subjects which are joined by and will use a plural, whereas subjects which have either or, neither nor will use singular. Matlab, Radha and Meera are coming home. Yes, ma'am. Ram and Shyam are going for the party. Sita and Geeta have been punished. Either Sita or Geeta has been punished. Is. Neither Sita nor Geeta is punished. So neither Yes. nor, either or may Singular. singular. Now, please give me an example of either or. Either you are coming, nor I will go. So nor No, either के साथ तो और लगता है ना. और. either or. नहीं, neither nor, either or. Either you are coming or I will leave. Either you eat Either or के साथ either. neither nor होता है. Either nor. Either or होता है साथ में. हाँ, either or, neither nor is the usage. लेकिन आप देखेंगे कि both you and I will eat the ice cream, or either you or I, either this or that. When there is a choice given, then there is a singular usage of the verb. Is the pertinent point to be remembered. Now, Yes. this is what somebody was just mentioning when they were talking about with regard to state and people. Abhi 1 minute pehle hi. So, Yes, I was saying. yes, please. Sometimes a singular noun is used to denote a plural thing. But because it is used as singular, so we have to be careful. Look at it. Wrong. The government prefers to let matters rest, but events may make them change their mind. Them as an objective, right? But it cannot be a plural objective because government is regarded as one. The government One. prefers to let matters rest, Singular. but, Yes, ma'am. but events may make it change its mind. अभी government के ये form भी नहीं ले सकते. May make him change his mind, make her change its mind. When the gender is unknown, then it, right? The government prefers to let matters rest, but events may make them. अभी देखिए prefer की usage यहाँ पे. जहाँ पे prefers है वहां पर it's. जहाँ पे prefer है वहां पे Two will come. Two. हाँ, हाँ. I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. Okay. मैम this is a fixed preposition ma'am. I think है ना. मैम prefer के साथ हमेशा to का यूज होता है ना. Yes, fixed one. हाँ. एक बार आप repeat करें तो वापस. What were you saying? मैम आई एम सेइंग कि prefer के साथ हमेशा to का यूज होता है. ये fixed Prefer के preposition है ना. साथ. Absolutely prefer. Now, rule 5. The verb in a sentence containing or, either or, neither nor agrees with the noun or pronoun
nearest to it. This is a very careful rule. Again, I am saying कि देखिए रूल याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैम कितने सारे रूल हैं और हम सारे रूल्स को किस प्रकार याद रख सकते हैं, पर थोड़ी सी कोशिश अपन कर सकते हैं. अब आप देखिए, neither the shoes nor the bag matches the dress. shoes प्लूरल है और बैग सिंगुलर है, एक ही बैग. क्योंकि बैग सबसे पास में है तो मैचेस आ गया. अगर सिर्फ इसका ब्रेकअप कर दे सेंटेंस का, द बैग मैचेस द ड्रेस, बिल्कुल ठीक है. नीदर द शूज नॉट द बैग मैचेस द ड्रेस. लेकिन जैसे ही हम बैग्स लगा देते हैं बैग की जगह, नीदर द शूज नॉट द बैग्स मैच द ड्रेस. जैसे ही प्लूरल बैग्स बनेगा तो वहां पे मैच बन जाएगा. उसी प्रकार ये उल्टा कर दीजिए, नीदर द बैग नॉट द शूज मैच द ड्रेस. तो अब क्या रूल है ये कि जो भी क्लोजेस्ट है वर्ब के, नाउन प्रोनाउन, उसके बेसिस पर वर्ब का क्या फॉर्म है ये डिटरमाइन होगा. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, वर्ब्स है ना, रेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं, 4 प्रकार हैं उनके: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं. तो ये इसका 5वां रूल है. When the subject is followed by, as well as, along with, besides, not, etc., ignore them. Use the singular verb because the subject is singular. Matt, as well as his dog, are expected shortly. नहीं, is expected. क्योंकि Matt is expected shortly. उसके साथ कौन आ रहा है इसका कोई वो नहीं. Pratik, along with his brother, is going to school. Pratik is going to school. उसके साथ if there is a band, there is a brigade, there is an army. Should not be. विकास के दावे हैं, वह दावे होते हैं जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं तथा राज्य द्वारा समर्थित होते हैं. नमो नारायण मीना, please mic off. Sorry ma'am. No problem. Yes. So again, please have a look whether if the subject is singular and is followed by, within commas, a group, the general, along with, and this is very important, competitive exams में भी ये बहुत ज़्यादा इस तरह का question आता है. Grammar के competitive papers में तो ये वाली चीज बहुत ज़्यादा आती है. The colonel, along with his brigade, is expected to arrive shortly, is marching towards the border. Right? क्योंकि यहाँ पे हमका क्या है कि R नहीं लेना है, हम तो colonel is marching towards the border. Whether he is bringing his contingent, whether he is bringing his brigade, is something which we are not going to bother about. So rule 6 says, when a singular subject is followed by, within brackets, along with, besides, as well as, then we only look at the original subject. We don't go into the details of the others. Next, in sentences that begin with here, there, the true subject usually follows the verbs. Here are the chocolates. There is a puddle. So here is the chocolate. There are big puddles. तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन. दिस रूल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू टेल यू दैट it is not compulsory that the identification of the subject will only be done from, क्या रे वो तो जो सेंटेंस के शुरू में लिखा है ना वही सब्जेक्ट. We can't go by that logic. Here, there वाले sentences में, here, can anybody make sentences with here and there for me? Yes, please. Here is a group of scholars. Here is a group of scholars. Lovely. There is a big ball lying on the road. There is a big ball on the road. There is a component of the research methodology coursework going on. Right? What more? 1, 2 more examples, please.
here are the datas for the research work. Here is the data. Again, datas. Where okay, data. Priyanka, because there is nothing like datas. Where are the data? Like Okay, the government data is- is itself. Hmm? Sorry, datas. I'm saying here are the datas. That is what I'm saying. Data is a plural only. Okay, okay. Data Where is itself the is data? right, right. There is the data. Then yes, ma'am. हाँ, that not there is here are the data because हम तो उसको जैसे government का example देखा ना हमने in the same Yes, way yes, ma'am. Plural. Yes, ma'am. is to be treated as singular only. For example, India, the country, will be treated as singular. Rule 8. Now this is with regard to money and years and periods and distance. 1947 is the year of our independence. We don't say 1947 are the period of our independence, right? Again, 10,000, 1 lakh is the price I had to pay as ransom, whatever. But I don't say 1 lakh are the price I paid as ransom. So sums of money, periods of time, distances, Yes, ma'am. all go as singular. Singular verb. And not 10 kilometers is too far. The distance between Jodhpur and Kota is 400 kilometers. I'm not sure whether it is 400 or Yes, ma'am. It is 480 kilometers, ma'am. 480. Oh my God, I've never been to Jodhpur. Kota. So I'm not very sure. 480 is a long way to go. And that is a tough call. Extreme west. Yes. But Kota is located towards what part of Rajasthan? Jodhpur is West Rajasthan. Yes, ma'am. And it is on southern, you can say southern, ma'am. Because touching to MP also. Kota. Yes, Kota touches Southern. MP, so southern Rajasthan, from west to south. Okay. Now, rule 9. This is rule 9, even though this thing, I'm not sure whether it is appearing clearly for you. It's hidden in the title because at the moment I do PPT, I am unable to see you people, and then that, that becomes difficult. So we thought that the font size is okay and we stick to the screen like this. Is it okay? Yes, ma'am. It's okay, Yes, ma'am. ma'am. Visible, ma'am. Visible. In the case of words such as lot of, all, some, pay attention to the noun after of. All of the cake, singular. All of the cakes. Some of the cake is gone. Some of the cakes are gone. A lot of the cake is gone. So look at the noun. So always more or less you have to look at the noun, the positioning of the noun, the identity of the noun in order to take your call on what type of a form of the verb are you going to use. Yes. Now, this I expect you people to participate more because collective nouns such as groups, populations, family, class, institution, state, the verb can be singular or plural depending on their usage. Most of my family is here. Most of my family are here. Half of the population was against the bill. Half of the population were against the bill. So when you talk Family about is, and the families are here. most of the family is here. Most of the family are here is also correct. Families की जरूरत नहीं है. Yes, ma'am. Most of the class is here. देखिए, Yes. I can see But one ma'am, my line. आया है ना यहाँ पे my, most of my family. हाँ. But Then- family as a unit is constituent of multiple people, na? Family can be mother, father, spouse, offspring, Yes, ma'am. People. right? Now, I can see that there are 196 people in the class right now. So most of the RM, most of the doctoral scholars are here, or most of the PhD class is here.
Both are correct. So you have to see that in collective nouns which refer to a segment of the population, there the usage can be singular as well as plural, is or are. And here is one chance where largely, see, it is better to keep it as singular. Like we studied in the example when we said the government may be treated as a single entity. In the same way, the family may also be treated as a single entity. The population of a state may also be treated as a single entity. So there is a possibility that we stick to this type of a usage. But again, so this rule 10 actually tells you that there is a chance for shifting, for sometimes, using singular or plural. None of them are, see, language, you have to realize that language is a constant work in progress. In the same way, the grammar is also a continuous work in progress. People who are interested, Oxford, Cambridge, all of these dictionaries every year bring out word of the year. So once upon a time, ChatGPT became the word of the year. Last year, I think it was what? Zombie mode. I'm forgetting what was the word of the year. In the same way, anybody? Zombie. No, zombie mode nahi tha. Some other mode tha. Yes. And so how come these words of the year are emerging? Because new words are getting coined all the time. And then they are subsequently going to get entered into dictionary. So then grammar is there. But believe me, grammar is not a static thing. There was menience, ma'am. Menience mod. Minions. I'm forgetting what was I really liked the word of the year last Yes, year. ma'am. I've forgotten what it was. But in any case, so what am I trying to tell? I'm saying key dictionary and language is not a static thing. It doesn't happen key. It remains the same always. It is subject to change, amendment, evolution over a period of time. In the same way, the conservative rule is this, that the government is, the family is, the population was. But now what is happening? Family are, population were, population are ready for a new census. So it is now slowly undergoing a change. And in this world, it is said that change is the only constant. So sometimes we should be willing to accept change. Now, this is with regard to subjects. Mathematics, by the way, have you noticed? At least my childhood, we always said in the shortened form as maths. But now, when I listen to people, students, teachers in schools talking, they say ki math. In the same way, civics as subject versus civic sense. News in itself, news, if you remove the S, I do not know, new would completely change the connotation of the usage, right? So, subjects, zoology, geology, computer science is, we never say computer science are. Students of computer science are doing this, so because we are saying student. The student of computer science is, because we are referring to only a single student. So news is, mathematics is, civic sense is, are all specified usage. Now, in sentences that express a wish, request, or contrary to the fact the word were is used instead of was. I wish my sister was here, where you are expressing a wish. I wish. इमेजिन वाला सेंटेंस है, इस वजह से वर्ड का यूज होगा. फ्यूचर इमेजिनेशन. Future imagination. I wish India were the richest country in the world, were the country with the highest GDP in the world. Aditya requested that she raise her glass. How would this be? That she raises her glass.
हाँ. Yes, ma'am. हाँ, no, Confusion लग रहा है raise थोड़ा is सा. correct. When someone is requesting another person, then raises नहीं होगा. She rises early every morning. He and she rise. Sita and Gita rise early in the morning. So rise. Even the usages of raise and rise tend to. Now, before I talk about English language, I want to tell you something about Latin language. Latin is one of the most Ma'am, ancient. previous example, excuse me, ma'am. Ma'am, previous example में raises इसलिए नहीं आया क्योंकि requested second form आ गई थी past tense में इसलिए. Yes. So Okay. now, Latin as against English. अब आपको पता है कि लेटिन की क्या क्वालिटी है कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, नाउन कहाँ आएगा, नाउन का क्या फॉर्म होगा, वर्ब का क्या फॉर्म होने वाला है, इंटरजंक्शन कंजंक्शन का क्या फॉर्म होने वाला है, उसमें स्पेसिफाइड है. तो आपको सिर्फ शब्द देख के पता लग जाता है. आपको पता है फ्रेंच में भी ऐसा ही. फ्रॉम द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स, शब्द से पहले क्या आ रहा है, शब्द के अंत में क्या आ रहा है, उससे हम ये बता सकते हैं कि इस शब्द का क्या यूजेज है. क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये. इंग्लिश में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अनइन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज है. हर शब्द को अपन कहीं पर भी पुश कर सकते हैं. अभी जैसे कि हमने अभी पढ़ा प्रोनाउंस के बारे में. They can be subjective also, they can be objective also, they can be possessive also. So सेम शब्द को अपन वाक्य की किसी भी भाग में ले जाकर उसका अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर सकते. तो इसीलिए ये पता लगा पाना मुश्किल होता है कि अरे ये एडजेक्टिव है क्या, ये वर्ब है कि ये एडवर्ब है. क्योंकि कोई स्माइल्स ब्यूटिफुली स्माइल्स, तो वर्ब एडवर्ब की पोजीशन शिफ्ट हो गई. तो अब क्या है कि जब हम शब्द को देख के ये नहीं समझ पा रहे हैं ना कि ये वाक्य का क्या भाग है, तो इसका मतलब ये है कि हमको ग्रामर के रूल्स पे रिलाई करना है. भाषाएं जैसे कि लेटिन, जैसे कि फ्रेंच, यहाँ तक भी संस्कृत, जिस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया गया है उससे पता लग जाता है कि हाँ भैया ये तो संज्ञा ही है, ये तो सर्वनाम ही है. बट यहाँ पर ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा क्या है. तो इसलिए हमें ग्रामर के रूल्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ता है ये समझने के लिए कि हम इसको किस प्रकार से इंटरप्रेट. अब ये देखिए कुछ एरर्स हम क्या करते हैं. Some nouns are commonly used with singular verbs, although plural in form. Some nouns are commonly plural in usage, even though they are used in singular. तो जो अभी हम आपको एक चीज बताएं, खासतौर से scissors, a pair of scissors. तो basically scissors तो एक ही होती है. In the same way trousers एक ही होते हैं, लेकिन हम उसको प्लूरल के प्रति के फॉर्म में यूज करते हैं. ये देखिए, अब आप इसका एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि न्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, मोलासिस, इन सबको हम एज सिंगुलर यूज करते हैं. टाइटल्स ऑफ बुक्स, फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड प्रेजुडिस, कितना भी लंबा टाइटल हो, मिडनाइट एंजल्स इज, तो हम उसको एक ही करते. राजस्थान पत्रिका इज, वी नेवर से राजस्थान पत्रिका आर. टेलीविजन शो को भी उसी प्रकार हम सिंगुलर में ही कर सकते हैं, इवन दो दे आर प्लूरल. ट्राउजर्स, सीजर्स, कॉन्टेंट्स को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि सीजर एक ही होती है. अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, है ना, लेकिन फिर भी हम उनको हैबिचुअली प्लूरल फॉर्म में ही यूज कर रहे हैं. Right? What are suds, by the way? Anybody can tell what is the meaning of the word suds? Anybody? This soapy water remaining after washing is called suds.
Next, how to use agree. Take the example of animals and how they come into sentences. जैसा कि मैंने कहा, अब ये आपको 12 रूल तो बता दिए. It will be difficult for you to, imbibe or work upon these 12 rules. But slowly, with usage, with habit, with understanding that there should be a synchronization between all the parts of a sentence in terms of they must agree, in terms of case, in terms of there should be a concord within sentences. So देखिए, dogs are made anxious. Anxious dog is not able. Dogs and cats are pets. A dog and a cat are in our house. A dog or a cat is in this house. So usually either the dog or the cat is in my room. Abandoning a dog or a cat is grossly irresponsible. अगर आप इन 6 वाक्यों को देखें तो आपको क्या पता लग रहा है? डॉग्स, जहाँ पे डॉग्स है वहां पे आर आएगा, जहां पे सिंगुलर है वहां पर इज आएगा, जहां पे दोनों मेंशन है वहां पे आर आएगा, जहां पे चॉइस है वहां पर इज आएगा, है ना? तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं. मुझे पता है कि इनको याद रखना इन इटसेल्फ इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, फिर भी कोशिश करनी चाहिए. नाउ what do we have? We have a series of examples. हाँ, अब ये पहला देखिए. The manager was one of the people. मतलब बहुत सारे हैं who are permanently and comprehensively stressed, that even their hair and clothes appear. अगर is होता, the manager is one of the people who is so permanently and comprehensively stressed that his hair and clothes है. His hair होता सिर्फ, तो hair appears to be at its wits end. अब ये देखिए कि इस सेंटेंस में अगर हम there को इट से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे आर की जगह हमने इज ले लिया, तो हम बाकी के शब्दों को यहाँ पे भी देर की जगह इट का इस्तेमाल करा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या हम आर यूज कर रहे हैं या हम इज यूज कर रहे हैं. तो दिस इज द इडियम ना, देयर विट्स एंड इडियम है ये. हाँ बेटा, व्हाट जस्ट अ सेकंड मैम, इट इज अ इडियम. व्हिच वन इज इडियम? देयर विट्स एंड. हाँ, their wits end. हाँ, but then to be at his wits end भी तो हो ही सकता है ना मैम, right? अगर हम उसको, the manager is one of the people who is so permanently and comprehensively stressed that even his hair and clothes appear to be at its wits or at his wits end. तो ये there की जगह यहाँ पे it आने का चांस ज्यादा है ना मैम? Maybe yes. Wits end. No, you don't agree? It's just that the moment you bring about these small changes, his will come stressed that even his hair and clothes. हाँ, even his hair and clothes तो हो गया. Appear को appears भी बन सकता है. But in a way, this young lady, what is her name? I'm sorry, I missed her name again. And the moment you get the camera off, the thing is that image disappears. Priyanka. Not Priyanka. The other young lady. Chalo, no fuss. Next time she comes around. Yes, Sonu. Miss Sonu. At their wits end is idiomatic usage and it should not go. I say he at his wits ends can also be taken because wits end is basically the idiomatic usage. At his or her or their but or our wits end is something which is subject to change. That is why I have marked there. Okay. Right? Okay. I have read statistics that show. Ulta bhi ho sakta hai. I have read statistics that that shows
Only 5 out of every 100 people became financially successful. By the retirement age of 65, only one of these people are truly wealthy. So what I'm saying is, if shows became are, then automatically that will also change. Why are these examples pertinent? When you people do your research related writing, you will find that this is an important component. Ki, are we able to match whether it is come or came, whether it is comes or came? Yes, ma'am. सब change हो जाता है, ma'am. So everything changes with these small subject verb agreement का change. Again, for people जो लोगों को दिक्कत है इसको समझने में, one of the best places to go and see it is any kind of a software like Grammarly and so on, because it will immediately point it out to you कि यहाँ पर this is not matching with the rest of the sentence. तो मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो मेरे पास ग्रामरली कहाँ से आया, लेकिन वो मेरे पास तो फ्री वर्जन है. अगर मैं कुछ स्पेशली कुछ कराना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि आप पेड वर्जन करिए. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पेड नहीं कर सकती हूँ. सो आई विल डू ओनली द फ्री वर्जन. आई हैव अ फीलिंग कि आप लोग, कल मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैम सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल है. बट मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन के बाद भी एक फ्री वर्जन है, एक पेड वर्जन है. फ्री वर्जन आपको बताता है कि यहाँ पे एरर है और अंडरलाइन भी कर देता है, बता भी देता है कि इसको इससे रिप्लेस करके देखिए, है ना. ओके, थर्ड सेंटेंस, she brought back another woman who wore a similar uniform except that it was pink trimmed in white. This woman's hair, अगर हम दोनों वुमेन की बात करें तो these women's hairs, again hairs, अभी ये hair और hairs ये एक बहुत बड़ा इशू है. Hair itself is plural. Yes, absolutely right. So ये वाली चीज बहुत कॉमनली एक एरर बनता है, इसीलिए मैं इसको डेलिबरेटली अलग से डिस्कस कर रही हूँ 1 मिनट के लिए कि हेयर इन इटसेल्फ इज प्लूरल, है ना. जिस तरह से बॉडी इज प्लूरल, इन द सेम वे बॉडी is difficult. Hair is one of the words which is used in plural form also. The singular signifies the plural. तो ये वाली चीज ध्यान रखने की है, क्योंकि hairs, my hairs are not growing, ये बिल्कुल गलत यूसेज है. नेक्स्ट, feminist activists must emphasize. Sorry for the interruption, ma'am. Sorry. Yes, I have. You say uses. So, what is the correct pronunciation of USES? We generally say uses. 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 We say uses. Uses. So I'll just show you another this thing. Example. If you type on Cambridge Dictionary online, right? Many dictionaries are giving this facility, but I am using Cambridge, so I can tell you. What do? They, you type in a word, right? What are they going to do? They are going to give you the meaning, this, that, and simultaneously, they will also give you a UK pronunciation and a US pronunciation. So that also kind of helps, because UK, US, आपको पता है कि एक मिनट, We follow Britain wala. So the school education system in India definitely follows Britain ka pattern, because we have all been educated on that. Only for those people who are into phonetics, it also gives the phonetic symbol. If I stop sharing this and I try to share the Cambridge Dictionary page, you will notice the word usage. Uses. Because I heard some of them are speaking uses. We say usage. Usage. And the US is also correct. Both are correct, na ma'am.
huh. So those people who have difficulty in pronouncing, and without going into phonetics and all of that, at least they recognize the word. So they must, as a remedial action, what must they do? They must, go listen on Cambridge online. That is slowly, see, PhD is not just about what you write, but there are so many instances where you have to present also. The synopsis presentation is there, the thesis defense is there, some of you who, if I do not know whether all of you have been admitted in 2023 or earlier than that, but you will also see that there are also examples when pre-PhD presentation submission has to be given. So correct pronunciation of the key terms is very important, besides not just being able to write. So I feel that for people who don't want to do anything else, at least they can listen and correct their usage. Now, feminist activists must emphasize the forms of power these women exercise and show ways they can be used for their benefit. The moment I change form of power, those women exercise shows way they can be used for her benefit. So what is happening? There are all over the sentence, there are multiple scenarios where one form change in the subject verb agreement, one form change or the one tense change will lead to the entire sentence undergoing a complete alteration. So this is also a factor which you people have to consider, that one, those से सब कुछ बदलने लग जाता है, shows से सब कुछ बदल जाता है, there it's से सब कुछ बदल जाता है, emphasize या emphasizes, say there is a remarkable change which can come in. It emphasizes. Yes, ma'am. Yes. So now practice, please. I want the answers to this one. The lady in the car looks like your mother. Yes, ma'am. Looks like. Because my mother looks pretty. Most of the milk is. Ma'am, is आएगा यहाँ पे, is. Milk will be taken as. In the same way, grain. In the same way, fruit. One of the flower has. One of the Ma'am, flowers. one of the flower has आएगा ma'am. So one of the glasses like that, one of the flowers Yes. as well. My one of the friends is. Or Sham is Either Ram or Sham. is coming. It's coming today. Here is the It is the newspaper. newspaper. Here is The group of dancers are. The group of Ma'am, dancers sorry, is here. And civics is my favorite subject. Because the group will be treated as one. But group of dancers are here is also equally correct. Like we discussed the family wala Collective matter. noun. Yes, ma'am. Collective In noun. the same way, group of dancers are here, is here, both will be okay. Civics Is will my be treated favorite as subject. singular. Is my. Is My favorite subject. Okay. So this is the end of our first PPT, which talks about subject verb agreement, noun verb agreement, pronoun verb agreement, kriya और संज्ञा का तालमेल, kriya और सर्वनाम का तालमेल, subject verb agreement we talked about. Now we will look at what other problems arise in sentences. So let me stop and close this PPT. Oh, ma'am, I have a question regarding the last slide actually. If it was
the group of dancers Mhm. are. Mhm. And if it was a group of dancers, so Then- is there a difference? Yeah. Yes, yes. The group of dancers are, a group of dancers is, Okay. Okay. right? The group of dancers are arriving today. A group of dancers is arriving today. So automatically signifies it them as a single unit together. So then that accordingly the usage of the verb will be set to change. Right? Okay, ma'am. Okay. So is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. So now some other faults which lead to confusion, and I deliberately chose these because I thought of all of you as research scholars and the assistance you are going to require in writing your research. Right? So now the first thing is please identify the error. The young lady on the phone was walking the dog. Huh. What is the error which is happening right now? Ma'am, the modifier is misplaced, I think. The modifier. Yes, lovely. Yes, please. Next. Second one. I heard on the evening news there was a robbery. Yes. Yes. And ma'am. you have to see that, I heard there was a robbery on the evening news, the presumption being that the robbery has occurred on the evening news. Third, please. In the evening, rolling down the mountain, the explorer spotted the rock wall. Spotted me. Stopped. What will be? Please, the third one. The explorer stopped the rock with his foot rolling down the mountain. With his foot rolling down the mountain. Are Ajay stopped the rocking. Yes, please. Stop the rock. Sorry. Rolling down the mountain. Is this correct or incorrect, please? Ma'am, I think it's correct. Okay. Thank you. Fifth, the fourth one, sorry. This may not be considered though. This one. Yes, please. The fourth one we are looking for. After rock will by With his foot, I think. the explorers stop the rock by rolling. The No, explorer stop stopped the rock with his rolling down the foot. mountain. The comma also can be dispensed with over here. Abhi, this is done now. We will not look at it now. You people tell me about this fourth one now. Okay, ma'am. Ma'am, we are looking for a babysitter who doesn't smoke and owns a car for our 6-year-old baby. Yes, my baby. इसको सही करें, दो तरीके हैं इसको सही करने के. Come on. And this is important. And this is where we are making errors. Usually when we are writing our research work, that we are not attributing the actor and the action and the desirability as per the proper sequence. Is the thing. Yes, please.
Come on. Ma'am, after who neither smoke nor a car. नहीं नहीं, neither विदर कुछ नहीं करना है. Okay, We ma'am. are looking a baby sister for our 6-year-old. Oh, sorry. अभी 6-year-old will not own the car also and will not be smoking also, hopefully. Yes, ma'am. So come on, where is the error? Ma'am, we are not able to find. Sorry, ma'am. We are Ma'am, looking confusion हो रहा है a थोड़ा सा. baby sister Ma'am, this is a who wrong. doesn't smoke He can't. and He owns can't. a car for our Smoke, ma'am. He's 6-year-old just of 6 years. baby. Ma'am, 6 years old baby भी आना चाहिए फिर. Baby भी Can आना we चाहिए. apply comma after Baby old word is 6-year-old? Baby भी आना चाहिए मैम. हाँ, बेबी भी आना चाहिए. यस, ठीक है. मैं भी सोच रही थी मैम कि इसको आगे लगाएं, बट बेबी के बिना मैम इनकम्प्लीट लग रहा है. नहीं नहीं, लेकिन 6-year-old सिर्फ बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. फॉर अ 6-year-old वी आर लुकिंग फॉर अ बेबी सिटर. तो मतलब अब बेबी सिटर किसके लिए कर रहे होंगे? The attribution is coming with babysitter, ना, कि there is a baby Yes, ma'am. who doesn't smoke and owns a car. So what are we looking for? अभी तक क्या दिख रहा था? पहला सेंटेंस देखकर कि the baby doesn't smoke and owns a car, है ना? But for our baby 6-year-old we are looking for a babysitter. Yes, please. Next one. Wrapped cookies. The teacher served wrapped cookies to the children. In aluminium foil to the children. उल्टा अरे, उल्टा पूरा सेंटेंस No. बोलिए. This The is very simple. The teacher served the wrapped cookies. This will come, ma'am, after served. The rest of the part in aluminium foil wala, the teacher served cookies wrapped in aluminium foil to the children. So is this correct now? Yes, ma'am. Anna. So then, otherwise, what is the previous sentence giving the sense? It is saying that the children are wrapped in Children aluminium. are wrapped. It seems like children are wrapped in aluminium foil. Yes, absolutely, absolutely. Yes, please. Last one. Charlie driving home from work is spotted as a stray puppy. Or driving home from work, comma, Charlie spotted a stray puppy. Whereas, what is it looking like originally right now? Charlie spotted a stray puppy driving home from work. कि मतलब लग रहा है कि puppy drive करके जा रहा है. Puppy is driving. Yes, ma'am. Yes. So now you've got the exact sense of what is going on. The error. So now modifiers, as I think the young lady just said, a modifier is a word, phrase, clause that clarifies or describes more about another word, phrase, or clause. Adjectives and adverbs are modifiers. Phrases and clauses can also be. So it need not be कि एक single ही है. Right? Single usage of modifier. She danced. ठीक है. Dance is the verb. She danced prettily. So how did she dance? Prettily. Prettily here is a modifier. It is also an adverb. Okay. Now, it is an adjective. Now, two common modifier errors are misplaced modifiers and dangling modifiers. Misplaced modifiers जो आपने देखा अभी अपन ने misplaced के ही सारे examples देखे हैं कि where the sense is not getting conveyed, it seems that the baby smokes, does not smoke type of scenario is being presented. So then somebody. So what is the sense being conveyed? सुमन टीचर है, प्लीज म्यूट योर माइक. आप नहीं जानते? सुमन मीना जानते होंगे बूढ़े से आदमी कोई है, कोई पत्ते खेलने वाला. Miss Suman. मीना ही है.
यहीं मकान है कहीं आसपास। सुमन बेटा आपका कॉन्वर्सेशन पूरा हो गया हो तो अपन पूछ mute रही कर, हूँ। लग रहा है फोन पे है। कुछ ना हुई। वो जो बात थी ना, वो सीएल की ये केदार की सीएल लगी, वो बात बहुत पूरे एरिया में फैला दी इसने तो। I can't remove her एक दिन वो also, but बहस हुई थी, I पौने take 4 बजे गया था उस टाइम। remedial action वो also. इसने सब जगह फैला दी। वो होती है ना बात, जिस बंदे की होती है उसके पास तो सबसे लेट आके पहुंचती है। तो Suman, मेरे पास we तो are बाकी not पहुंची है, interested in पता listening चला to your मुझे। household gossip. सब जगह ये पत्ती खेलता है ना, तो वहां बोल दी इसने। फिर उस सुआलाल ने तो इसको फोन भी किया बबलू जी को कि सुमन, बबलू जी आप क्या करवाते रहते हो, वो जो सुमन, मैड मैं वो भी अपनी ही है, लेकिन मतलब मैम इनकी अगर क्यों वो राहुल लगवा सर दी। हो या दिव्या मैम अगर अवेलेबल हो अभी और तो वो इसके कर बाहर की तो सकते आदत है। हैं। आज कोई टामोटी में एक आदमी लग रहा है, सुमन, मुकेश नाम का, रंगलाल। रंगलाल। somebody with a loud voice, please tell her. हाँ केदार ही थे। कोई तामोटी का एक टीचर है, उससे भी कह दीजिए आज अशोक खेरा कि आज मैं I भीगा hope था। she's तो not अशोक going भी to tell जोड़ता us है her ना, ATM परेश बोल रहा password था or मैं भीग रही net थी, तो banking बारिश आई तो account रुके थे and वहीं पे। वो तामोटी में जो password मुकेश और लग रहा है user कोई ID टीचर, pin. वो रुका था, तो वो कह रहा था कि तुम्हारे स्कूल में जो मैडम आई है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। केदार 11 बजे गया था, उसकी लाइन खींच दी। चुप रहिए। पौने 4 की बात, 4 बजे से 11 बजे आ रहा हूँ हम। अरे सुमन जी म्यूट कीजिए। 4 बजे आया। हाँ फिर उसने बोला भी था कहाँ रहती है ये सुअलाल ने, जब Now इनको what फोन to किया do? Suman, वो मतलब सुमन जी कहाँ की है, अपना माइक बंद कीजिए। अपना भी हो तुम्हारे वे। सुमन जी अपना माइक फिर बंद बस कीजिए। आप बाहर निकाल दो इनको। बाहर मैं नहीं निकाल सक रही हूँ। I can't remove her. कर दिया शायद सर ने। पता नहीं, she might turn up again. Okay. Yes, please. So now, modifiers. और क्या है कि यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन कॉज करती है एकेडमिक राइटिंग में भी, कि क्योंकि जो सिनॉप्सिस हमें लिखनी है, जो पीएचडी लिखनी है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स तो हमने अभी आपको बताए ही, डैंगलिंग मॉडिफायर्स अभी हम आपको और उदाहरण के साथ बताते हैं। सो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर की कहाँ पे देखिए, शब्दों को वापस से रीराइट करना इस तरह से कि जिसके बारे में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर ना। सो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर से क्या होता है कि इट बिकम्स ऑकवर्ड, इट बिकम्स फनी। जैसे कि शी वोर अ बाइसाइकिल हेलमेट ऑन हर हेड दैट वाज टू लार्ज। सिंपल है, हेलमेट के बारे में कह रहे हैं वाज टू लार्ज, उसके सर के बारे में नहीं कह रहे हैं कि वाज टू लार्ज। शी वोर अ बाइसाइकिल हेलमेट दैट वाज टू लार्ज ऑन हर हेड। तो बड़े सिंपल से तरीके से हो जाता है। अगर हम चाहें तो कई बार इन मॉडिफायर्स को हम विद इन ब्रैकेट्स ले लेते, तो उससे क्या होता है कि ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि ये बाइसाइकिल हेलमेट के बारे में ही बात की जा रही है। तो क्या है कि जो कॉमा की है ना, कॉमा की करेक्ट यूजेज भी हम इस संदर्भ में कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 2 आप लोगों को मुझे करके बताना है करेक्टेड। बताइए। जल्दी बताइए, ये तो बहुत सिंपल है। The patient with stomach pains was referred to a physician. हाँ, the patient with stomach pain was referred to a physician. कि पेशेंट के पास ही बताओ ना कि उसको क्या दिक्कत है, instead of making it, describing it too far. Now, dangling modifier describes something that isn't in the sentence. Dangling modifier का क्या प्रॉब्लम है कि कई बार तो वो ये करता कौन है, नाउन कौन है, who's the doer, वो ही छुपा देता है। जैसे कि ये उदाहरण देखें, when there is nothing for the modifier to modify, it is said to dangle. For example, riding in the sports car, the world whizzed by rapidly. Who's riding in the sports car? While riding in the sports car, Rahul riding in the sports car, Farhad riding in the sports car, notice that the world whizzed by rapidly.
तो when there is nothing to modify, तो वो डैंगलिंग मॉडिफायर है. आपने किसी चीज के बारे में बता दिया, लेकिन वो चीज क्या है अगर आपने उसी को आइडेंटिफाई नहीं किया तो वो डैंगलिंग मॉडिफायर है. अब ये अमेंड द फॉलोइंग डैंगलिंग मॉडिफायर्स. चलिए इसे अमेंड करिए. यस प्लीज. The cat was seen under the bed while playing a guitar in the bedroom. नहीं, डैंगलिंग मॉडिफायर में आपको सिर्फ इसी को रिवर्क नहीं करना है. You have to add something. She's playing a guitar in the bedroom. While he was playing guitar in the bedroom. Yes, ma'am. While he was playing the guitar in the bedroom, the cat was seen under the bed. हाँ, while Geeta was playing, while Sita was playing, while Sonu was playing guitar in the bedroom, the cat was seen under the bed. Yes, please. Next. Second. While he was packing for a trip, a cockroach scurried down the hallway. A cockroach scurried down the hallway. When नहीं आ सकता यहाँ पे. When he is packing for a trip. When. देखिए, वो भी बता रहे हैं कि कुछ हो रहा था, उसी समय कुछ और हुआ, तो वो when नहीं होगा, while होगा. Yes, When ma'am. Yes, ma'am. two While- things are While happening. packing for a trip. Yes, somebody else was saying. Two things are happening in a single time, right? In the same time, so we use while. Yes, please. Third one. While driving to the veterinarian's office, the dog nervously whined. वेटरनेरियन का ऑफिस तो क्या है, जैसे अपन लोग डरते हैं ना डॉक्टर के पास जाने से, वैसे ही डॉग्स विल बी अफ्रेड ऑफ गोइंग नियर अ वेटरनेरियन. तो फिर बट ये इस सेंटेंस का क्या सेंस निकल रहा है कि डॉग गाड़ी चला रहा था और डॉग को ही डर लग रहा था. While it The was dog driven, nervously whined while being driven to the veterinarian's office. Yes, while being driven to the veterinarian office. Very nice. Simultaneously, while being driven to the veterinarian's office, the dog nervously whined. While I was driving to the veterinarian's office, the dog, my pet, nervously whined. Multiple ways, but some clarity. क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि डॉग खुद ही ड्राइव करके जा रहा था और डर रहा था. So we should have that clarity, which is missing over here. Yes, please. Fourth one. This is simple. Fourth one, please. Somebody. I chose a romance novel which was piled up next to the bookshelf. Okay. Out of the pile next to the bookshelf, I chose a romance novel. Piled up next to the bookshelf is incomplete. It is a dangling modifier. It is not giving us exactly what is there on the bookshelf. So for that, we need to clarify it in any way possible. Last one, chewing furiously, the gum fell out of my mouth. Come on. When I was chewing furiously, the gum fell out of my mouth. While I was chewing, or in the process of chewing, or in the process of chewing furiously, the gum fell out of my mouth. Anyways, 2-3 ways this dangling modifier can be corrected. Now, so one thing we said was that the modifiers are not dealt with in the proper manner. Another problem which arises in sentences is from parallelism. So parallelism is, and this is important for research scholars to note, parallelism is when similarly placed words, phrases, clauses are put together. For example, I looked for evidence in the pool, in the forest, in the book. Okay. And they are easy to remember also. Rest, residue, remainder, the
The world literature first started from oral and then it came down to being written. So लेखनी बाद में आई, पहले बोला गया. तो हमेशा शब्द इसी तरह से जोड़े जाते हैं ताकि जब हम उसे बोले तो वो ज्यादा समय तक हमारी मेमोरी में हमें याद रहे, है ना. तो in the pool, in the forest, in the book, it's a list. They are put together in a similar way. But what happens when we say in the pool, forests are green, bookshelf? So haphazard. It is not put together as it should be put together. It is difficult to remember. So parallelism क्या है? हमेशा आपको कई प्रकार की लिस्ट देनी पड़ेगी. zoology वाली, botany वाली, certain types of creatures की लिस्ट, बहुत सारे तरह की लिस्टें देनी पड़ेंगी. तो उन लिस्ट को हमेशा प्रेजेंट करने का क्या तरीका? आप उसको इस प्रकार से नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी आपने लगा दिया और किसी के बारे में भी कहने लगे. So what is the expectation of parallel structure? Unbalanced sentences should go. And parallel structures create rhythm. Now, correct the parallelism in the following sentences. Come on. If you want, I will number them as 1, 2, 3, 4, so that it is easier for the class to talk about through numbers. Yes, please. So, Kelly had to do ironing, what do is the parallelism? washing and shopping before her parents arrived. हाँ, Ma'am, just we can repeat use it acid again. and type of structure. Ma'am, acid and type of structure भी तो ऐसे जो है ना conjunctions को हटा करके हम commas use कर लेते हैं. हाँ, कॉमा भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये पहले वाला करके बताइए. आप लोगों को समझ तो आ गया कि पैरेललिज्म क्या चीज है? Yes, ma'am, rhythm बिठाना उनकी structure Yes. से. हाँ, because then rhythm also contributes to making it easier to read. And that is also a feature that whether you want your writing to be difficult to understand completely, or you want कि yes, there should be some clarity in it so that it is easier to go through. Yes, please. Changing iron to ironing. Kelly had to do ironing, washing, shopping before her parents arrived. हाँ, और कोई तरीके से बताएं? Kelly had to do, so Sonu says Kelly had to do the ironing, the washing and shopping before her parents arrived. Come on, make it easier, crisper, shorter, easier to grasp. Kelly had to iron, wash and shop before her parents arrived. Very good. Kelly had to iron, wash and shop. Or you could say Kelly had to iron, to wash and to shop before her parents arrived. She said, the first respondent said, Kelly had to do the ironing, do the washing and the shopping before her parents arrived. How you build that parallelism depends on you. Whether you want to keep it short, please keep all the verbs in the same form. क्योंकि यहाँ पे iron को भी ironing तो होना ही है, या फिर washing को wash shop आना है. In a sentence, all verbs should be in the same form. Yes. Come on. Next. Hurry up. Somebody. Driving a car requires coordination, patience, and good eyesight. Requires coordination, patience, and good eyesight. Yes. Yes, please. This third one is a trick. Swimming in the ocean is tougher than a pool. Right. This is the original sentence. Swimming in the ocean is tougher than in a pool. Try करिए. Parallelism. No need to mention here much because tougher में भी हमारी comparative degree आ रही है ना मैम. So much is not required here. देखिए, much को आप हटा सकते हैं. But the issue which is arising is that still it is disbalanced. There is no balance in the sentence. Mr. Jitendra Singh.
Please Then mute yourself. swimming in the ocean is much tough than a pool. Just a second now. Let's get rid of this. Jitendra Singh, please mute. Swimming in the ocean, then a pool is much tougher. Mr. Jitendra Singh, please mute yourself. If you want to give the answer, then please give the answer. Ma'am, swimming in the ocean is much tougher than swimming in a pool. Yes, than swimming in a pool. Swimming in the ocean is much tougher than swimming in a pool. That is the thing. Ki in a pool, than a pool makes no sense. Mr. Jitendra, please mute yourself. If you are answering, then please answer the questions posed. Thank you. Yes, please. Swimming in the ocean is much tougher than swimming in a pool. The point is this, that you are not getting the clarity with regard to what type of swimming. What is the purpose of the pool when you are setting up this parallels? Yes, please. Fourth one. I would rather work at a second job to pay for a new car than to pay for a new loan. Sorry, for a loan. नहीं हो सकता मैम. Okay. वापस से बोले. I would rather work at a second job to pay for a new car than to pay for a loan. Than to pay a loan or pay for a loan. I would rather work at a second job to pay for a new car rather than to pay a loan, rather than take a loan. है ना? Because then का loan के साथ कुछ relation नहीं बैठ रहा है. Yes, please. Fifth one. How you look in the workplace is just as important as your behavior. As your behavior. तो बेटा यही ओरिजिनल है. And ये in नहीं होना चाहिए, ये Ma'am, as important your behavior, 2 times important. How you look at the workplace is just as important as your behavior at the workplace. Okay. So 2 things are equally important at the workplace. How you look, what is your behavior? But यहाँ पे behavior के साथ clarity नहीं आ रही है कि how you look at the workplace is just as important as your behavior at the workplace. Yes, please. This 6th one. This also requires parallelism because there is a disbalance. Sorry, 6th वाला तो ठीक लग रहा है मैम. ठीक लग रहा है? अच्छा. See, where is the disbalance? देखो. Anybody would want to try the 6th one, please? Indian cuisine is tastier than the British cuisine. Yes. Darshana, I think. I don't know. Maybe. Indian cuisine is tastier than the cuisine of Great Britain. और या दोनों में food ले लो. Indian food is tastier than the food of Great Britain. Food. Right? Indian food. तो दोनों में cuisine लगा दे या दोनों में food लगा दे. Because there'll be people who will say, yeah, cuisine, will it be taken as equivalent to food? So the sentence has missing parallels. Jim's opponent in the ring was taller, carried more weight, and not as strong. मैडम 6th में जैसे ये भी तो कह सकते हैं ना, the Indian food is tastier than that of. Then that of Great Britain भी कह सकते हैं. Absolutely कह सकते हैं. No problem. But the thing is कि parallelism build करने के अलग-अलग तरीके हैं, Mr. Diva, right? Yes, please. 7th one. Ma'am, Jim's opponent in the ring was taller, carried more weight, but not as strong as him. लेकिन कुछ और करिए.
because disbalanced है, कहीं पे taller कह रहा है, सॉरी मैम, इन द रिंग को हम इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? ओपोनेंट है तो इट इटसेल्फ सेइंग ओपोनेंट, ही हैज टू बी इन द रिंग ओनली। Because in the ring का मतलब क्या है कि क्रिकेट फील्ड में नहीं है, फुटबॉल फील्ड में नहीं है, टेनिस कोर्ट में नहीं है। मैम दैट इज अंडरस्टूड मैम कि रिंग में है तो है, वी आर टॉकिंग सम रेसलिंग और जूडो टाइप वाला गेम। सो we delete this in the ring. Jim's opponent was taller. देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यस ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, राइट। हाँ, मैम स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्गर आएगा। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वाज टॉलर, वेटियर एंड नॉट स्ट्रॉन्गर। या तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में तीनों को एक पे ही ले आओ, बट मैम वी कैन नॉट चेंज अपने टॉलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टॉलर इज आवर फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग मार्क, सो वी कांट टच टॉलर। बट मैम वेटर जो वेट है उसके आगे ईआर लगाएंगे तो फिर मोर हटाना पड़ेगा ना हमें। हाँ हाँ, कैरीड मोर हटेगा, वेटियर, तो वेटियर कैरीज द सेम सेंस बट नॉट स्ट्रॉन्गर लास्ट and not stronger. Jim's opponent in the ring was taller, weightier and not stronger than him भी कह सकते हैं in order to complete it, है ना। मैम बट नहीं लगा सकते एंड की जगह, we cannot replace but no but not stronger, no. Okay, yes please, eighth. Working for living is much harder than going to school. Okay. Studying, ma'am, studying. Then studying at school is much harder than studying. Then studying at school is also taken. Studying at school, school को नहीं छोड़ सकते हम यहाँ। Studying in a school, ये हो सकता है ना? Yes, studying at होता है, and why at होता है अभी अपन इस पीपीटी पर आई गए आपको बताने के लिए। Now prepositions. So prepositions, the 8 parts of speech में preposition भी एक part होता है। preposition का क्या रोल होता है कि वो noun, pronoun, object के बीच में relationship बताता है। The clothes are in the cupboard. The cat is on the cupboard. The dog is under the bed. In, on, under, before, after, ये सबका रोल क्या है? They perform a prepositional function. They help to establish relationships between noun, pronoun, and object. Now, prepositions in English are extremely idiomatic. What is an idiom? ये भी एक जानने की, जिसे अपन ये कहते हैं ना कि habitual usage of language. Idiom कहावतें, मुहावरे, वो उस कैटेगरी की चीज आ जाती है, वो होते हैं idiom. तो क्या है कि prepositions, ऐसे prepositional phrases, हजारों prepositional phrases हैं. In, down under, down above, here and above, here and below, बहुत सारे prepositional phrases हैं जो कि ये कहते हैं कि आपको किसी वाक्य में relationship establish करने के लिए दो भागों में क्या यूज करना है. कंजंक्शन तो सिंपल है कि कंजंक्शन से तो भैया ज्वाइन करना है सेंटेंसेस के पार्ट्स को, बट प्रेपोजिशन क्या है, वो ये बताते हैं कि ये नाउन और ऑब्जेक्ट के बीच का स्थिति क्या है, पैरामीटर क्या है. Placement, determine the place. Determine the place. Yes, place, location, spatial relationship between the parts of the sentence is done by the preposition. Now, most commonly people use incorrect prepositions, incorrect placement of preposition, incorrect usage of preposition, and that causes confusion. For example, look at this first one. She will arrive to 5 p.m. She will arrive by 5 p.m. का कुछ और मतलब है. She will arrive at 5 p.m. का कुछ और मतलब है. She will arrive after 5 p.m. का कुछ और.
शी विल अराइव बिफोर 5 PM का कुछ और मतलब है। तो बिफोर, आफ्टर, एट, बाय, एक एक प्रेपोजिशन के यूजेज से अपना जो वाक्य है उसका जो मतलब है वो ट्रांसफॉर्म होता है या बदलता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। आई एम गोइंग इन द सिटी। इन द सिटी मतलब हम सिटी के अंदर भीतरी भाग में जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोटा आ रही है तो मैं कहूंगी आई एम गोइंग टू द सिटी। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आई एम गोइंग इन द सिटी ऑफ कोटा, आई एम गोइंग टू द सिटी ऑफ कोटा, है ना। अब ये आई एम गोइंग टू द स्टोर फॉर मिल्क, तो अब ठीक है, फॉर मिल्क doesn't convey as much sense as it is to say I am going to the store to buy milk। देखिए, एक और prepositional usage है जो कि बहुत ही typical है, जो कि है less और few के बीच में। I want a few drops of honey, I want very less honey। I have only a few rupees, I have very less rupees। less कहाँ पे रखना है, few कहाँ पे रखना है, ये एक बहुत specialized usage है when you want to talk about। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है ना, फ्यू तो काउंटेबल के साथ लगता है। नहीं, बट आप सेंस क्या कन्वे करना चाहते हैं? There are very few students in the class या there are very less students in the class। कई बार the participation was less than expected या फिर participation was fewer than expected। तो एक बहुत specialized usage है, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है, तो हम आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि ये जो preposition है ना, ये preposition sometimes अपने अभी तक क्या देखा, ये subject pattern है, क्या सेंटेंस पैटर्न है, सेंटेंस में ये त्रुटियां या एरर हम लेके आ सकते हैं, हमें इन त्रुटियों को करेक्ट करने की जरूरत है, सारी चीजें मान ली। फिर हमने कहा कि देखिए कि केस एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉनकॉर्ड होना चाहिए, अपन को ये ध्यान रखना चाहिए, इसके रूल्स पढ़े हमने। हमने कहा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। मॉडिफायर्स देखे हमने कि मॉडिफायर्स क्या है, डैंगलिंग, पार्शियल मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म कहाँ हो गया, प्रेपोजिशन। तो हम सब इसका भावार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको ऐसा लगेगा कि अरे ग्रामर के हिसाब से तो मैंने तो बिल्कुल सही इंग्लिश लिखी है, फिर भी ये सही नहीं है। तो एक तो ये है कि आपको रूल्स आते हैं, एक वो है कि आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है, अच्छा शब्दों का ज्ञान है, एक आपको ये पता है कि यहाँ पे एरर होने का चांस है। तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं इन एरर्स को करेक्ट करने की कोशिश करूं। ये सारी जो चीजें हैं ना, वो सब एक साथ काम करती हैं, तब जाके जो आपकी भाषा है वो निखर के आती है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। देखिए, अब हम एक प्रेपोजिशन ले रहे हैं अबाउट। He worries about the future. He complained about the homework. I read about the flooding in the city. तो about का बहुत सारे तरीके से यूजेज कर सकते हैं। Act, अभी ये act है ना, ये बहुत बहुत सबसे ज्यादा ट्रिकी प्रेपोजिशन है act, क्योंकि इस act में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है कि इसको बहुत जगहों पर बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। I was waiting at the station, yeah, in the station. I was waiting at the train or in the train, yeah, on the train. तो at, in, on, ये सारे तो prepositions ऐसे हैं कि बहुत ही tricky हैं। हर कोई इनमें एरर करता है कि I visited Mehrangarh Fort in Jodhpur. I visited Mehrangarh Fort at Jodhpur। और करेक्ट यूजेज पता है क्या है? एट। आप किसी बिल्डिंग, किसी इवेंट, किसी सिटी, किसी स्टेट, किसी कंट्री, तो हम ये नहीं कहते हैं आई वेंट इन यूके, आई वेंट टू यूके। तो ये सारे छोटे छोटे भाव हैं, इन छोटे छोटों में बहुत सारे करेक्शन की आवश्यकता है। स्माइल्ड एट हर, लुक्ड at him, looked in him, looked on him, looked above him, looked below him। ये prepositions की जो usage है ना, ये एक खास तौर से ऐसा
संदर्भ है जो कि सेंटेंसेस में गलती ला सकता है। हमने पैरेललिज्म भी ले आए, हम सब कुछ ले आए, और हमने टेंस का भी ध्यान रख लिया, हमने केस कॉन्कॉर्ड अग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन अगर हम प्रेपोजिशन पे गलत हो गए तो फिर हम उसमें बहुत सारा नुकसान झेल सकते हैं। अब ये देखिए, फ्रॉम, differ, suffer. The results differ from my original life. She suffers from dementia. Medicine वालों का specifically medical field के लिए, you suffer from a illness. You don't suffer in illness. You suffer from an illness. है ना? This can't be counted as plagiarism because it differs from the original idea. तो ये सारे छोटे छोटे, कहाँ पे फ्रॉम होना है, कहाँ पे इन होना है, ऑन होना है. अब फॉर, बी श्योर टू अकाउंट फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज. आई हैव टू टेक अकाउंट फॉर एनी changes which might occur in my research plan. I returned the transcript to the interviewees to allow for revision. I had to ask for my supervisor's permission to allow for changes in my original research plan. They are searching for the missing. So I was searching, or I was looking for the landmarks as a tourist. Any number of how you use for, how you use from, how you use above, how you use below. Prepositional phrases तो अगर आप देखने जाएंगे तो you will find that they are at least thousands in number, and they will only come to people who habitually, मैं भी नहीं कह सकती हूँ कि मुझे सारे आते हैं, तो habitually using the language over a prolonged period of time will only give you the ability to be able to understand these prepositional phrases is the thing. लेकिन preposition को भी अब हमने देखे, संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा, क्रिया, उनकी रिलेशनशिप देखी, टेंस देखा, देखा कि क्रिया का कौन सा रूप है, क्योंकि फोर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को ध्यान रखते हुए हमने क्रिया के भी सारे रूपों को देख लिया, और फिर हमने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे. लेकिन अगर हम preposition पे गलती कर गए, इन की जगह ऑन कर दिया, above की जगह below कर दिया, तो वो पूरी सारी की सारी बाकी की हुई मेहनत सब बिल्कुल खराब हो जाए. ठीक है. इन, अब the same problem occurred in my recruitment strategies resulted in, she will succeed in, ये नहीं है she will succeed on, she will succeed at, she will succeed in fulfilling her objective. It will be written like that. तो ये जो छोटे छोटे है ना, कई बार अपन टू, फॉर, ये सब छोटे छोटों में बहुत ज्यादा एरर्स करते हैं. अपने पास समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको क्या दिखाना चाहती थी, मैं आपको ये, क्योंकि एक तो ये कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है ना, तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा हर एक चीज के बारे में नहीं कह सकते. एक सेकेंड, लेट मी चेंज द विंडो so that you people can see. So this is Cambridge University Press, and it is pointing out what are the errors we tend to make in the prepositions. Is it visible to the students? Yes, ma'am. I've made in the window. Okay, thank you. So now you look in, on, off, to, for, on behalf of, or even on behalf of is a type of a idiomatic usage. Yes. Conditionals can be problematic. Nouns and set phrases can be problematic.
verbs, which we said कि verbs, verb का कौन सा form लगना है, singular, plural, helping verbs, modal verbs, will, would, can, could, the difference. Look at this sentence. I like this competition because it is exciting. If it were liked की जगह like होता, I like this competition because it is exciting. But the moment वहाँ पे liked लग गया है, I liked this competition because it was exciting. So automatically everything undergoes a change with one small change in the subject verb agreement. And then automatically everything will follow forward. Then there are spelling mistakes. Mistakes for prepositions, more examples. We would like a seminar on the subject. It could be a center for recreation, not center of recreation. Figures are not available at the moment, not in the moment. Then look at the problems arising from word order. Yes, I also have a favorite restaurant. I have also ki jagah. We have quite a big training room instead of a quite big training room. More prepositional, this thing, the reasons of increasing weight, nahi, for increasing weight. By the way, there is a new report which has come that there is tremendous amount of obesity in India. I think more than 12 million people now suffer from obesity, and that has me alarmed. More than 1 in 5 students were enrolled for further study, not to further study. Again, I often used to go out and play with my friend at the countryside. खास तौर से देखिए, एक तो at, in, on, ये 3-4 preposition तो ऐसे हैं कि we have to be very, very alert with regard to how we are putting them to use. In, on, at, off, for. आप ये 6 तो लिख ही लीजिए. Above, below तो फिर भी बहुत easier है in order to handle. But these are the prime candidates where we tend to be, getting confused. We tend to overlook things. We tend to kind of mess up. So off, for, at, in, on, to. These 6, which are here right now on the screen for you people, are probably the prepositions where most chances of error are arising. And it has to be corrected so as to make sure that, we don't go on making any errors. So can I stop sharing now? Yes, ma'am. Yeah. Thank you for your sharing. Yeah, and it was also nice teaching you people. Very grateful that you people were a patient audience, except for Thank some you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. these small things here Thank and there. you, ma'am. God bless you. May all of you become PhDs, doctors. Thank you, Shwam. Thank you, ma'am. 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 Bye-bye. Good evening. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.